Hi everyone. So I'll start my current affair today with our quotation. So a smart student read the news, but a toppers understand that. And this is so true. Because when you are reading the news, you don't have to mug up the lines. You have to connect them with the papers. And this is what we do in our class. So whenever you are reading the news, you should analyze, you should understand that what kind of conflicts we are going through, what is happening in the world, right? And if we are not having conflicts, then we are not moving towards, revolution. This is what thinker Karl Marx said. And not only Karl Marx, Hegel also gave his theory about thesis, synthesis, conflict, and synthesis. Let's understand what he says. So, it is very important to understand these current affairs to have revolutions, right? So, he gave a theory of thesis. Thesis is the idea. You are generating idea, you are understanding that what we are going through, right? Then we have antithesis. Antithesis is the opposite of this thesis, the conflict that you have of this idea, right? So you are not agreeing to this thesis, right? So this is antithesis, right? So this antithesis is giving us what? Conflict. And this conflict is going to produce us what? Synthesis, right? The revolution, the new idea. And this is why it is very important that you read current affairs. And it is very important that you connect it with paper. This is why it is very important to analyze them. So whenever I come with current affairs, make sure that you are writing the keywords, make sure that you are understanding them properly. Morning. So let's move towards first news. And please get ready with the pen and paper as we'll be writing more and more keywords today. So moving to the first news, let's understand it that imagine that one day an influencer named Ankush Bahuguna, a well-known influencer, he receives a very strange phone call, right? And the caller sounds very real, right? Very true. And he says that, sir, we found something, right? And we are calling from a government agency, and your name is linked to a crime, right? And you have to cooperate with us, right? This is what caller says. And Ankush gets shocked, right? So the caller quickly sends him fake documents, okay? ऑफिशियल सील्स भेज दी जाती है, केस नंबर भी भेज दिया जाता है, सिग्नेचर इज ऑल्सो देयर एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू अंकुश लुक्स वेरी रियल. ठीक है, सब कुछ बहुत सच्चा दिखाई देता है, राइट? सो ही कैन नॉट डाउट दैट. तो ऑन द वीडियो कॉल द स्कैमर एक्ट्स लाइक द रियल ऑफिसर. ठीक है, बिल्कुल असली साउंड कर रहा था एंड देयर वाज लाइक फेसेस was there, right? Formal clothes was there, strict orders were there, sound was exactly sounding like the officer, right? So they like warn him, if you don't cooperate then you can be arrested, and do not tell about this investigation to anyone, right? So this was told to Ankush. Now they keep him online for like hours, asking personal questions, checking his ID, उसे और ज्यादा fake evidences दिखाना, right? They like properly made him believe that they are true. So this came in like the real trap, right? They act fast, they talk loudly, and they create pressure, which is like unable to recognize very quickly. ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर दे दिया जाता है that you have to believe them that whatever they are saying is correct. ठीक है, इस सिचुएशन में तुम्हें डाल दिया जाएगा. They are so pro at this, right? तो स्कैमर्स है obviously. तो अब ऐसा होता है कि they like keep him online for hours. बहुत सारे questions पूछ लिए गए. ठीक है, अब this is how the scammers make people panic and steal the money. But thankfully, Ankush later understood that it was a digital arrest scam. ठीक है, a new cyber crime that was like, which is like a trend going on right now, जहाँ पे criminals जो है pretend करते हैं as a police officer, या तो CBI या फिर NIA, right? And they like scare people into, basically obeying them. And not only this, Ankush was like arrested for 2 days. He was home arrested. He was not allowed to put phone down. He was not allowed to eat. He was not allowed to do anything. Right? That kind of pressure, that kind of mental harassment they gives you, that pressure they gives you. So now we understood that he was digital arrested. So Ankush shared his experience to like warn others, saying that even educated, aware people can get trapped. So be aware of these traps. Now, this is not a made up story. This actually happened. You can search it on the Google also. There is an influencer named Ankush with whom this actually happened. Now, imagine an influencer with millions of followers. If he can get trapped, then imagine what can happen to general people, normal citizens, right? How will they come out of this trap? Right? What government is doing? What initiative government is taking? If this is existing in such large number, and if such amount is extracted, then what government is doing? What kind of awareness it is spreading? So this is what we'll understand.
Now we understood that what digital arrest is, right? What kind of scam it is. Like it is a modern cyber fraud, like where scammers use the like fear of arrest and like fake authority to extort the money. With this we have understood. Now this isn't a small, isolated case. Over time, many such cases, started, surfacing from different parts of the country. बहुत जगह से ये चीज देखने को मिली गई, ठीक है। तो अब कुछ विक्टिम्स जो है उनका बहुत ज्यादा अमाउंट लॉस हो गया, स्पेशली एल्डरली पीपल, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ सच स्कैम्स, ठीक है। और अभी क्योंकि रिसेंटली जब तक कोई तादाद बढ़ती नहीं है, व्हेनेवर देयर इज नॉट एनी लाइक रीच ऑफ क्वांटिटी, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिस केस आल्सो। जब तक वो लार्ज अमाउंट में केसेस नहीं हुए, वी डिड नॉट फील टू रिकॉग्नाइज इट, ठीक है। अब हुआ ये कि बिकॉज इतने ज्यादा केसेस आ रहे थे, तो स्पेशली एल्डरली पीपल लाइक हु आर मोर वल्नरेबल टू द सिचुएशन, so these scams became so like widespread that on its own the Supreme Court took notice, and this is called suo motu cognizance. Okay, please write down it. So I hope that you understand that what scammers do, right? What kind of officers they become, what pressure they create, what happens to them, and what kind of environment they come up with. ठीक है, video call पे आते हैं and then they say certain things and they have to like build the pressure, and when you are trapped in that, they are going to extract money from you. ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब ये न्यूज में क्यों है, why we are reading this, इसकी बैक स्टोरी तो समझ में आ गई, that what digital arrest is and who is like implemented from it, that we have understood. So on 1 December 2025, what happened, that Supreme Court in a bench that is led by justice, so ordered that the CBI will take over of all the investigation. अब जितने भी इससे रिलेटेड स्कैम्स होंगे वहां पे सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, राइट? बिकॉज अमाउंट जो है बहुत ज्यादा ले लिया गया है बिकॉज ऑफ दिस स्कैम, एंड अनदर थिंग इज इट इज हैपनिंग इन लार्ज नंबर, ठीक है। तो that means that whatever, like there is a final information report, that is FIR, that is filed for a digital arrest scam in any state or union territory, CBI will hold the investigation, okay? So state that had like earlier refused general consent to CBI, right, now asked to grant it, so that investigation happens smoothly without any jurisdiction. Finally उस चीज के लिए मान लिया गया, okay? CBI is involved in this, it means this is something very serious. This means this is something which is happening in large number, right? अगर इतना ज्यादा लार्ज नंबर पर हो रहा है तो now this raises the question also that why it wasn't done before, पहले क्यों नहीं किया गया? एकदम से इतने सारे प्रिकॉशंस लेने की पड़ी हमें, अगर पहले ही कुछ मेजर्स ले लिए जाते, so don't you think we would have like avoided it, the destruction that just happened, जो इतना अमाउंट ले लिया गया, don't you think that it would have like reduced? Okay, now this decision is part of like a larger attempt to deal with the modern and organized cyber crimes, right? As like more and more Indians, especially seniors, are being exploited digitally, another fear of legal arrest, okay? Now this Supreme Court orders CBI is now going to see these digital arrest scams, ठीक है। अब digital arrest हमें समझ में आ गया कि ये scammers जो है they pretend like a police officer and like court officials, and they will call people on video call, उन्हें set किया जाएगा, and they will like show these fake warrants and they'll act like the real officers, right? And their goal is to extort money, जितना पैसा निकाला जा सकता है उतना पैसा निकाला जाता है यहाँ से, right? I hope this is clear. So this is like a big problem in India with victims nearly 3,000 crores so far, losing nearly 3,000 crores so far. This is a big amount. इतना amount एक scam से निकालने ना, this is why CBI is involved in this. ठीक है, तो Supreme Court of India they noticed this issue, ठीक है, उन्होंने notice किया, and from this they noticed their own issue and they came with this idea, the suo motu, that's like recognizing their need, ठीक है, recognizing themselves कि problem क्या चल रही है, खुद से recognize करना, that is suo motu, ठीक है। Now if you remember, I explained this in the previous class also. So there is this one more recognition that Supreme Court has done, and for that I want you answer in the comment section. I'll be waiting for it. So a bench of judges, right, then including the Chief Justice, right, they decided that this case finally needs attention, direct, urgent attention, right? अब investigate कौन करेगा? CBI, Central Bureau of Investigation, right, has been asked to investigate, ठीक है? Now they are given free hand, मतलब वो अब क्या है, चेक बैंक्स कर सकते हैं, ठीक है, और जितने भी बैंक ऑफिशियल्स हैं उनसे चेक कर सकते हैं, राइट, और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं टेलीकॉम कंपनीज और सिम मिस इश्यू से कि वहां पे कोई सिम कार्ड का कोई मिसयूज तो नहीं किया गया, राइट। अगर ये सारी चीजें देखेंगे तो ज्यादा ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो दे आर गिवन फ्री हैंड, डू व्हाटएवर यू वांट टू, वी जस्ट वांट द कल्प्रिट्स बिहाइंड द बार्स।
आई होप इट इज क्लियर. तो नाउ दे आर गोइंग टू आस्क हेल्प फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज ऑल्सो, जैसे कि इंटरपोल, अगर जरूरत पड़ी तो. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेट्स को इसमें हामी भरने की जरूरत थी. ठीक है. तो कुछ कुछ स्टेट्स, राइट, पहले जो था दे डिड नॉट अलाउ सीबीआई टू इंटरवेन इन दिस, राइट, टू वर्क इन देयर रीजन्स, राइट. तो अब क्या हुआ है, नाउ द कोर्ट हैज आस्क्ड टू गिव देम अ कंसेंट टू द सीबीआई सो दैट दे कैन इन्वेस्टिगेट इन ऑल द केसेस, राइट. सो ये है स्टेट का और सेंट्रल का डिफरेंस. नाउ why is it serious, इतना ज्यादा सीरियस क्यों है? बिकॉज द कोर्ट सेड दैट इट इज अ पार्ट इंडिया प्रॉब्लम, इट इज हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया. सिर्फ एक छोटे हिस्से में नहीं हो रहा है, सिर्फ एक छोटी सी स्टेट में नहीं हो रहा है, इट इज हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया एंड द सम व्हिच वाज एक्सटॉर्टेड, राइट, इट इज अ ह्यूज अमाउंट. इसी की वजह से भी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग दिस वेरी सीरियसली. ठीक है, इतना सबको समझ आया? इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, एनी इशू? ओके. अब ये प्रिवेंट कैसे किया जाएगा? ये प्रिवेंट किया जाएगा, द कोर्ट टोल्ड टेलीकॉम रेगुलेटर्स कि तुम स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ. ठीक है. अब जो है जितने भी मल्टीपल स्कैमर्स हैं, राइट, दे कैन नॉट मिसयूज देम. दूसरा, बैंक्स और आईबीआर आर आस्क्ड टू एक्सप्लोर. ठीक है, एआई मशीन लर्निंग को जितने भी डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज हैं वहां पर, यू हैव टू डिटेक्ट दैट, एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूल अकाउंट्स, which is also called mule accounts. ठीक है, इतना समझ में आया? So mule account is like account that is used to transfer stolen money. ठीक है, उन सबको भी recognize करना है, right? And we have to find out that which accounts are behind these strategies. Did you understand what the news is about, or should I repeat it again? Should I give the summary? ओके. नाउ आई होप दिस इज क्लियर कि क्या क्या प्रॉब्लम है. अब प्लान क्या 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 है कि कोर्ट ने डिसाइड करा है कि जितने भी साइबर फ्रॉड टाइप्स हैं, जितने भी फेक जॉब्स हैं, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हैं, राइट, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए. ठीक है. इसके साथ साथ ये सारे स्कैम्स भी जितने भी स्कैम्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, राइट. बट डिजिटल स्कैम अरेस्ट जो है उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, राइट. दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, राइट. Ab, I hope that this news is clear to you. Now why we are reading this news? Because this news comes in the relevance of GS paper 3, which comes under cyber security. ठीक है. और उसके बाद IT में, banking economy में, right? Then this current affair shows the roles of Supreme Court. कि Supreme Court क्या है, कैसे कैसे judgments ले सकते हैं, right? What kind of judgment they can take and what kind of investigation they can like give on certain matters which are like coming up regularly. Okay. So it can be used in prevention also, regulations also, or law of enforcement also in the discussion, right? Okay, summing it up, so what did we understand? We understood that this digital arrest happened, right, where an influencer also like came in this trap, and he was digitally arrested, house arrested for like 2 or 3 days, and he didn't know about that, and like people, that scammers were trying to extract money from him, right? So they pretend to be police, court, CBI officer. They will build so much of pressure on you that you have to recognize them as a real officers. इतना ज़्यादा pressure create कर देते हैं, right? Now they threaten people on video calls and show fake warrants also. और वो बोलेंगे आपको कि आप digital arrest में हो, जैसे कि अंकुश को बोला गया था that there is some like on the airport your bag is found and there is some there are some elements, right, like drugs are found in your bag. तो उसकी वजह से and we are going to investigate them, but till we investigate you cannot move out the house, you cannot go to the other state, and you cannot do anything, and you have to be on the video call 24/7. And he was like doing that for 2 days. He did that, right? But then later on he got the message of his friend, and she said that you are behaving weird today. As she was living nearby, she recognized that, and he was not allowed to even text. They were like tapping his phone also, right, to this extent that they couldn't go, right. This is why CBI, right, CBI intervened. Supreme Court said that now CBI is going to investigate such frauds. बाकी के भी स्कैम्स पे recognition दिया गया है, but then top priority digital scam arrest पे दी गई है, right, because amount 300 crore already lost across India, which is a huge amount, ठीक है, and cases are like rising day by day for this reason. The Supreme Court took suo motu action. The suo motu is recognizing itself, right? This is suo motu. And then you have to tell me in the comment section, as I said, that there is one more thing, right, which is related to this keyword. I explained in the last current affair yesterday. So this becomes a national level news, right? This is why it is very important that this recognition, this awareness is done. Now, SC ordered CBI to investigate all digital scam arrests.
cases across India. So now state must now give consent to CBI even if earlier denied it. Now state does not like intervening. तो इसीलिए पहले जो है सीबीआई को मना कर दिया गया था, बट नाउ दे हैव एक्सेप्टेड इट एज इट इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. नाउ सीबीआई गेट्स अ फ्री हैंड. ठीक है, फ्री हैंड का मतलब है दे कैन इन्वेस्टिगेट एज पर देयर willingness. So investigate banks, moves, accounts and telecom misuses in choose they'll like focus on, and they'll move to tracing scams जितने भी स्किम के स्कैम्स है, राइट, उन्हीं पे भी फोकस करेंगे जितने भी मिसयूज हुए हैं सिम के, राइट. एंड दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द फेक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आल्सो व्हिच आर लाइक पास इज ओन, जो बहुत ज्यादा रियल लगते हैं, एंड दिस इज व्हाई पीपल गेट फूल्ड बिकॉज ऑफ दीस थिंग्स. आई होप दिस इज अंडरस्टूड टिल नाउ. So this is your first news, and as the cases are rising, so for sure in prelims you will get one question from this. This is for sure. So this is why it is very important that you read this news. Not only read this news, understand it. Is there any question? Should we move to second news? Okay. Now center moves bills for pan masala, cess and higher duties on tobacco products. Okay. So picture a country where like many people consumes items like cigarette bhi, gutka bhi, tobacco, right? All this is going, and it is like generating huge amount. Okay. Now there is sin goods. These are called what? Sin goods. Now we'll understand what these sin goods are. Or is there anyone who is going to tell me what sin goods are? What are sin goods? मैम सीसीटीवी सर्वेलेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपने ये बताया था. यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड. So so picture a country where like these things are consumed in a very high number, right? So these are sin goods that are taxed heavily क्योंकि ये हमारी हेल्थ हार्म करते हैं, right? And also there is government revenue. So after the like introduction of GST in 2017, so the government had added a special tax called the GST compensation cess. GST. So now they added the GST compensation cess on these goods, right? So this extra tax helped the states to recover revenue that is lost into the GST. ठीक है, जितना भी रेवेन्यू लॉस हुआ है, राइट, उसको रिकवर करने के लिए दिस एक्स्ट्रा टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, जितने भी ये सिन गुड्स हो गए उन पे, ठीक है, उन सभी पे, उन्हीं सभी गुड्स पर दिस एक्स्ट्रा टैक्स वाज इंट्रोड्यूस ताकि जितना भी वो लॉस हुआ है, ठीक है, वो रेवेन्यू जनरेट किया जाए. आई होप टिल हियर दिस इज अंडरस्टूड यू. अब क्या है, नाउ द स्पेशल केसेस वाज लाइक ऑलवेज मेंट टू बी टेम्पररी, कि जैसे ही हमारा रिकवर हो जाएगा पैसा विल स्टॉप. ठीक है, विल स्टॉप दिस सेस दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, नाउ टू हेल्प दिस क्लियर सम गवर्नमेंट लोन्स और जितने भी ऑब्लिगेशंस थे, तो बाय दिसंबर 2025 दीज ऑब्लिगेशंस आर एक्सपेक्टेड टू बी ओवर. 2025 के दिसंबर तक सारे के सारे लोन्स और ऑब्लिगेशंस पूरे हो जाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये टेम्पररी है, सो दिस इज गोइंग टू एंड, राइट, दिस जीएसटी कंपनसेशन सेस इज गोइंग टू एंड, राइट. जितना रेवेन्यू हुआ था, जितना हमें रिकवर करना था, वो रिकवर हम कर जाएंगे दिसंबर तक, राइट. So now for people consuming tobacco or pan masala, that would make the items much cheaper, which may increase consumption and reduce government earnings. ठीक है, अब अगर cheaper, अगर ये सेस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तो हमारा cheaper हो जाएगा and people will start consuming it more. सस्ता होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, right? और basically because this is a sin goods, so sin good is like it is impacting your health in a large number, बहुत ज्यादा cancerous है, right? So अब अगर इस पे ज्यादा पैसे बढ़ा दिए जाए तो people will consume it less क्योंकि महंगी चीज है. ठीक है, but now अगर ये cheaper हो जाएगा तो people will consume it more and more, right? So for this reason there are certain things that are happening. So to prevent that government, through the finance minister, they introduced this two new bills. नए नए दो बिल इंट्रोड्यूस करे गए हैं. तो नए नए दो बिल कौन कौन से हैं, ठीक है, जो कि 1 दिसंबर 2025 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं. तो एक तो है लेवाई परमानेंट एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, जो टबैको प्रोडक्ट्स पर होगा, और दूसरा सेस इंपोज करेगा ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला, राइट. आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू. सो इससे क्या होगा कि आफ्टर दिस ओल्ड जीएसटी सेस जो इंट्रोड्यूस किया गया था और विच इज गोइंग टू एंड इन दिसंबर 2025, इसकी वजह से क्या होगा कि हम रेवेन्यू भी लेकर आ पाएंगे, राइट. एंड अदर थिंग इज कि इसका जो चीपर होने का जो डर था, दैट इट दीज प्रोडक्ट्स विल बी चीपर एंड पीपल विल कंज्यूम इट मोर एंड एज इट इज वेरी हैजार्डस, तो वो भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो पाएगा, राइट. सो द मनी कनेक्टेड विल गो वेयर, विल गो टू पार्शली टू द फंड हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी के पास जाएगा.
right? So in case of the cess on a pan masala and also maintain stable government revenue, ठीक है, दोनों चीजें वापस से जो यहाँ पे मिल रही थी, we are going to get this from the new bill that has been introduced on December 1. Is it done? Did you understand? तो अगर इसको शॉर्ट में समझे तो ये है कि गवर्नमेंट रीशेप कर रही है कि कैसे टैक्सेशन जो इन गुड्स पे है, राइट, उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बना जाए, परमानेंट बनाया जाए, इंस्टेड ऑफ टेम्पररी लाइक इट वाज डन इन दिस जीएसटी कंपनसेशन सेस जो दिसंबर में खत्म हो जाएगा, इसको थोड़ा सा परमानेंट बनाया जाए ताकि गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू भी जनरेट कर सके यहाँ से, और दूसरा रेवेन्यू के साथ साथ इट इज लाइक नॉट हार्मिंग पीपल, पीपल कैन कंज्यूम इट लेस, ठीक है, इसीलिए. So this new bill on tobacco and pass masala, basically on December 2025, the government introduced these two new laws in parliament. ठीक है, पहला central excise, ठीक है, amendment bill 2025, central excise, this central excise amendment bill 2025 and health security national security cess bill 2025. So these new two bills are introduced. ठीक है, अब ये नए laws कहाँ पर brought किए जाएंगे? So there was like text called GST compensation cess, ठीक है, टोबैको पर जो था, जितने भी प्रोडक्ट्स थे, पान मसाला के प्रोडक्ट्स थे, राइट. सो दिस सेस विल एंड सून क्योंकि गवर्नमेंट हैज नाउ रीपेड द लोन्स, तो इसकी वजह से अब गवर्नमेंट जो है वही सारे के सारे सेस खत्म कर देगी बाय द दिसंबर, राइट. सो दिस वे द गवर्नमेंट नीडेड अ न्यू वे टू टैक्स द प्रोडक्ट्स एंड कंटिन्यूइंग द अर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, इतना समझ में आया सबको? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, सिगरेट्स होंगी, बीड़ीज होंगी या फिर हुक्का वगैरह, जितने भी सिन गुड्स हैं हमारे पास, ठीक है, जितने भी, उन सब पर ये टैक्सेशन लगाया जाएगा, राइट. सो दिस विल लाइक स्टिल बी वेरी लाइक इट विल बी टैक्स हेवीली, ठीक है. और दूसरा, नाउ द मनी विल बी कलेक्टेड एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी सेस नहीं बट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है. So the tax rate on tobacco will not reduce. The government wants to ensure that tobacco stays costly, ताकि कम लोग उसे खरीद पाए, ठीक है. For pan masala also there is like a big change कि earlier tax was like based on how much they produced. पहले होता था कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, but now it will be based on machine capacity also. अभी machine capacity मतलब कि if a company has a machine, right, that can produce 1000 packets of like per day, 1000 पैकेट्स पर डे वो प्रोड्यूस कर रही है, राइट. सो इट मस्ट पे फॉर 1000 पैकेट्स, इवन इफ दे शो 600 पैकेट्स, दे हैव टू शो फॉर द लाइक दे हैव टू पे फॉर द 1000 पैकेट्स आल्सो, राइट. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. इसीलिए मशीन कैपेसिटी के थ्रू ही उन्हें पे करना होगा कि कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. शो कुछ भी करें बट जितने प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी हिसाब से दे हैव टू पे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू रहेगा, राइट. तो स्टेट जो है, सेंटर जो है, जितना भी पैसा अब तक इस सेस से कमा रही थी, राइट, दैट इज गोइंग टू बी द सेम, राइट. एंड स्टॉपिंग द सेस वुड रिड्यूस द रेवेन्यू, सो अ न्यू सिस्टम इज नीडेड, राइट. सो मनी फॉर द हेल्थ एंड सिक्योरिटी इज आल्सो देयर, राइट. दिस न्यू सेस ऑन पैस बनाना विल हेल्प अस फाइंड दी हेल्थ स्कीम्स आल्सो, राइट, एज द पार्शियली इट विल गो टू द हेल्थ फंड, ठीक है. इतना समझ में आया. दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स भी होंगे. फिर जो नया पैसा आएगा हमारे पास, राइट, दिस नई स्कीम, दिस न्यू मनी has a specific purpose, right. अब आता है कि क्या ये जो आइटम्स हैं क्या वो कॉस्टली हो जाएंगे अगर ये नए दो रूल्स आए हैं, राइट. दिस इज लाइक वी डू अंडरस्टैंड द आइटम्स, द प्रोडक्ट्स वर नॉट चीपर, बट जो नए रूल्स आए हैं, इज इट द सेम? So basically they have to pay tax for each and every packet they are producing. Exactly. So they have to pay for each and every packet. जितने भी पैकेट है, अगर 1000 बन रहे हैं per day, doesn't matter it's showing 600 or 400, you have to pay for each and every packet that you are producing per day. This is what it says. Yes, Sanya. तो नए रूल्स के हिसाब से टबैको एंड पैन मसाला स्टेन इज इन हाईएस्ट जीएसटी ब्रैकेट, मतलब 40%, ठीक है. प्लस एक्साइज ड्यूटी ऑफ सेस विल आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड. तो ओवरऑल टैक्स जो है हमारा हाई ही रहेगा, जैसे सेस में था हमारा ओवरऑल टैक्स हाई ही रहेगा. मोर टैक्सेशन होगा मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्शन होगी, राइट. तो जैसे कि जीएसटी कंपनसेशन हमारा पहले क्या होता था कि जीएसटी कंपनसेशन सेस प्लस जीएसटी ऑन अ रुपीज लाइक 10 पैकेट, दैट वाज इक्वल्स टू 5 रुपीज, राइट. बट अभी क्या होगा कि जितना भी हमारा सेंट्रल एक्साइज होगा, राइट, हमारा जितना भी जीएसटी होगा, राइट, प्लस हेल्थ नेशनल सिक्योरिटी, तो उसका क्या होगा, हमारे पास जितना सिमिलर हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या फिर उससे ज्यादा हमारा पास जो होगा हायर टैक्सेशन लग जाएगा. अंडरस्टूड? इज देयर एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? शुड आई रिपीट एनीथिंग? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके. अब गवर्नमेंट इन्हीं प्रोडक्ट्स को टारगेट क्यों कर रही है? इसलिए टारगेट कर रही है बिकॉज दीज आर कॉल्ड सिन गुड्स, गुड्स विच कॉज हेल्थ हार्म एंड
इट बेसिकली इट इज वेरी सोशल कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि टोबैको हो गया, ये कैंसर है और ये हार्ट डिजीज लेकर आता है, राइट। एंड दीज पान मसालास दीज गिव्स अस ओरल कैंसर, राइट। दिस इज व्हाई दे आर लाइक वेरी hazardous फॉर आवर हेल्थ। अंडरस्टूड। तो आइडिया ये है कि जितने भी एक्सपेंसिव हम बनाएंगे, राइट, लोग उन्हें कम खरीदेंगे एंड इट विल हेल्प देम टू डिस्करेज कंपनसेशन, राइट, एंड इट विल जनरेट मोर मनी फॉर द वेलफेयर, ताकि वो हेल्थ वाली चीजों पर, हेल्थ वेलफेयर पर लगाया जाए। अंडरस्टूड। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इतनी न्यूज थी ये, कोई इश्यू? ओके, now we are reading this because this comes in GS paper 3, right? And it is important because it connects us, it tells us about the revenue, about public finance also, about the GST also, right? तो हमें यहाँ पे टैक्स की कंटिन्यूटी के बारे में पता चला, ठीक है, कि कैसे सेस के खत्म होने के बाद भी देयर वर लाइक 2 बिल्स इंट्रोड्यूस्ड, और उन 2 बिल्स की वजह से द कंजम्पशन भी सेम, इट विल बी रिड्यूस्ड, ताकि प्रॉब्लम ना हो लोगों को, एंड द टैक्सेशन विल बी हाई, ठीक है। अब अगर टैक्सेशन हाई होगा तो इट विल हेल्प गवर्नमेंट टू हैव रेवेन्यू आल्सो, ठीक है। तो ये सिंटेक्स का कंसेप्ट भी हमें समझ में आ गया। इज देयर एनी इश्यू? ओके, नाउ moving to the next news, संचार साथी DOT order to phone makers to pre-install apps get significant pushback। क्या हुआ है कि अब ऐसे सोचो that every time you will buy a smartphone there will be one app installed in your phone automatically। तुम्हें वो चाहिए भी नहीं यार, but it will be there, ठीक है। Now it continues as a safety app, right, that is already inside your phone, so one that can help, you know, report all the frauds, all the like calls and basically SMS that are like block और स्टोलन, जितने भी लॉस्ट फोन्स हैं या फिर ब्लॉक कॉल्स हैं, राइट, चेक इफ द फोन इज जेन्युइन और नॉट, या फिर गार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ सिम्स इज आल्सो देयर, या फिर फेक कनेक्शन तो नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाट दिस संचार साथी इज, अ गवर्नमेंट डिजाइन्ड टेलीकॉम सेफ्टी ऐप, राइट, जो बनाया गया है आपकी सेफ्टी के लिए, राइट। सो दिस ऐप इज बिल्ट टू यू फॉर द स्कैम्स, ताकि आपको प्रोटेक्ट किया जाए स्कैम से, जितने भी फेक फोन्स हैं, ताकि जो स्टोलन डिवाइसेस हैं, राइट, और जितना भी मिसयूज ऑफ मोबाइल कनेक्शन है उससे बचाने के लिए दिस ऐप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अस। इतना समझ में आया? अब रिसेंटली गवर्नमेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट सेंट अ डायरेक्टिव टू ऑल द फोन मेकर्स कि तुम्हें अब से एवरी नाउ फोन शुड हैव दिस ऐप, राइट, मस्ट हैव दिस संचार साथी, and they should be like already exist in this phone, already installed in this in their phone, right? Even older phones already sold should get an update to add the app। पुराने फोन्स में भी ये ऐप होना मैंडेटरी है, राइट। सो हाँ गार्गी, एग्जैक्टली, इसे जो हम अगर हमारा दिस कंपेंसेशन सेस, ठीक है, अब वो दिसंबर में खत्म हो जाएगा, राइट। सो दीज टू न्यू रूल्स इसीलिए बनाया गया है, ताकि जो रेवेन्यू हमारा जो जा रहा था, राइट, उसको वापस से बचाया जाए। फॉर दिस रीजन ओनली इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। एग्जैक्टली, अंडरस्टूड। नाउ ओके, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया वो समझ में आया, ठीक है। ये जो है आपके लिए बेसिकली एक सेफ्टी टूल है, जो आपके लिए बनाया गया है, ताकि जो फेक कॉल्स होंगी, ठीक है, जितने भी बिल्स बेसिकली मिसयूज ऑफ ऐप होगा, या फिर कोई भी मैसेजेस होंगे, ताकि उन्हें ट्रैक किया जाए। आपका फोन अगर गुम गया है तो उसको ट्रैक किया जाए। इस सारी चीजों के लिए दिस ऐप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और उन्होंने बोला है गवर्नमेंट के दिस ऐप शुड लाइक रीच टू ईच एंड एवरी यूजर, ये पहले से ही प्री इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि लोग खुद से डाउनलोड नहीं करेंगे, इसलिए इसको पहले से ही फोन में डाल दो, बट दे मे नीड इट इन इमरजेंसीज, ठीक है, जैसे लॉस्ट फोन्स में, फ्रॉड कॉल्स में, स्टोलन फोन्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि इसको डाल दो। बट दिस मूव क्रिएटेड अ बिग डील्स, ठीक है, बहुत ज्यादा डील्स भी हुई, बहुत ज्यादा डिबेट्स भी हुई, क्योंकि कुछ फोन मेकर्स को इस चीज से प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी इस चीज से प्रॉब्लम है। दे आर नॉट हैप्पी। क्यों हैप्पी नहीं है? बिकॉज दे आर सेइंग दैट दे वर नॉट कंसल्टेड बिफोर, हम ऐसे कैसे इस ऐप को डाल दें, राइट। एंड सम कंपनीज हैव इश्यूज रिगार्डिंग दिस, कि दोज ग्लोबल पॉलिसी डजंट अलाउ प्री इंस्टॉलेशन ऑफ द थर्ड पार्टी गवर्नमेंट ऐप, कि थर्ड पार्टी गवर्नमेंट ऐप हम क्यों डालें अपने फोन में, राइट। सो दे मे रेजिस्ट सम कंप्लायंसेस, ठीक है। तो ये डिबेट चल रहा है इन दीज केसेस, राइट। तो एट द सेम टाइम अब यहाँ पे प्रिवेसी का कंसर्न आता है, ठीक है, डिजिटल राइट एक्टिविस्ट का कंसर्न आता है, और यहाँ पे ओपोजिशन पॉलिटिक्स का भी कंसर्न आता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे कंसर्न्स जो है बहुत ज्यादा सीरियस है। अब वो कहते हैं इज दिस अ स्टेप टुवर्ड्स सर्विलियंस, क्या गवर्नमेंट हमारे ऊपर नजर रख रही है? इज दिस व्हाई दिस ऐप इज इंट्रोड्यूस्ड टू अस,
right? If the government app is pre-installed and cannot be disabled easily, then could it be misused for the track calls, messages, device activity? हमारी privacy कहाँ है? That right to privacy that was given to us is it still here? Government is snatching it us from, right? तो इसका effectively मतलब क्या है, right? Why government is keeping an eye on us? Is this an app which is going to keep an eye on us? अंडरस्टूड? तो रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ट्राई टू लाइक दिस काम फियर. सो व्हाट गवर्नमेंट सेड, दे सेड दैट दिस ऐप इज नॉट इज बेसिकली मेंट फॉर योर सेफ्टी, खुद की सेफ्टी के लिए है, ना कि स्नूपिंग के लिए. कोई आप पर नजर नहीं रखता, right? This is what government said. So the communication minister said that people are free to delete. अगर तुम्हें नहीं चाहिए यार तो आप डिलीट कर दो, आप अनइंस्टॉल कर दो. This is not a permanent app in your phone. This is not mandatory. This app has been introduced to you so that people could be safe, because there are lots of fraud cases happening which we have just learned, right? तो इस वजह से इस ऐप को आपको दिया गया है, बट इफ यू डोंट वांट दैट यू कैन अनइंस्टॉल इट. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आप पर नजर रखें या फिर कुछ भी. सो द ऑफिशियली द गवर्नमेंट सेज इट्स ऑप्शनल, बट द पुश टू प्री इंस्टॉल मेक्स पीपल क्वेश्चन दैट हाउ ऑप्शनल इट रियली इज. अगर तुम इसको इतना पुश कर रहे हो दैट यू हैव टू प्री इंस्टॉल इट, पहले से ही फोन में होना चाहिए, तुम कोई नया फोन लेकर लेने जा रहे हो और ये ऑलरेडी ऐप उस फोन में है, तो सेफ्टी मेजर्स तो तभी भी क्वेश्चंस करेंगे ना, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम, दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैज बीन अराइज. इतना समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स अंडरस्टूड. तो इतना बात समझ में आ गई कि ये जो संचार साथी ऐप है, बेसिकली गवर्नमेंट मोबाइल ऐप, इट वाज मेड so that by the Department of Telecom, DOT, right? And it was made ताकि जितने भी रिपोर्ट्स हैं हमारे, ठीक है, फ्रॉड कॉल्स को लेके, मैसेजेस, स्कैम मैसेजेस को लेके, राइट, और जितने भी हमारे ब्लॉक या फिर स्टोलन फोन्स हैं उन पर नजर रखी जाए, और ये चेक किया जाए कि फोन जो है हमारा ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, राइट, और जितने भी सस्पिशियस सिम कार्ड्स हैं उनको ट्रैक किया जाए, ठीक है. इन सारी चीजों को लेकर हमने ये ऐप बनाया है, ठीक है ना. से ले सकते हैं कि दिस इज लाइक द सेफ्टी फॉर योर फोन, ठीक है, जो कि बट इन 25 देयर इज लाइक मेजर न्यू रोल दैट इज रिगार्डिंग दिस, ठीक है. अब नया चेंज नवंबर 28 2025 में आया है. तो डीओटी ने ऑर्डर दिया है कि एवरी न्यू फोन, ठीक है, सोल्ड इन इंडिया, राइट, मस्ट हैव दिस ऐप. नाउ दिस मस्ट इज देयर, as it was a question arising कि must है, तो like how free we are to uninstall this app, as it was said by the communication minister. कितने ज्यादा free हैं हम? If you are saying that it should be must, like pre-install it should be, then how free we are to uninstall it, right? So these kinds of questions are arising. Now this phones already in the market must also get it through a software update, और जो app है उसमें clearly visible होना चाहिए during the phone setup, hidden भी नहीं कर सकते, ठीक है. So there are these mentioning about this app. Is there any question? तो पहले ये वॉलंटरी था, ठीक है, बट नाउ ये प्री वॉलंटरी है, लाइक बाय डिफॉल्ट इट शुड बी देयर इन द फोन, ठीक है. अब गवर्नमेंट कह रही है कि इसकी जरूरत क्यों है? तो इंडिया हैज लाइक 1.2 प्लस बिलियंस मोबाइल यूजर्स एंड राइजिंग साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन, जो कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट और ये ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है. तो दिस हेल्प्स प्रिवेंट अस टू फेक सिम कार्ड्स, डुप्लीकेट आईएमईआई फोन्स, और मोबाइल थेफ्ट भी हमारी हेल्प करेगा, ठीक है. जो फेक बैंक कॉल स्कैम्स होते हैं उसमें भी हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज करने में, राइट. एंड देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस इन द ऑनलाइन फ्रॉड ऑल्सो, ठीक है. तो इफ thief steals your phone, you can like block it even before he starts using it. You can block it, right? For this reason this app has been introduced, ठीक है. अब तक इस ऐप ने अचीव क्या क्या किया है? सो बेसिकली दिस ऐप, लाइक गवर्नमेंट सेज, इट ऑलरेडी हेल्प इन मेनी थिंग्स, ठीक है. पहले तो फेक फोन्स को कैच करने में इसने काफी हेल्प की है, ठीक है. दूसरा, सस्पेक्ट करता है जितने भी हमारे सिम्स और फ्रॉड्स हैं. तीसरा, हेल्प करता है हमारे जितने भी स्टोलन फोन्स हैं उनको ब्लॉक करने में, राइट. सो इस ऐप ने इन सारी चीजों में काफी ज्यादा हेल्प की है. इज दिस अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब कंसर्न क्या है? ठीक है, अब हमारे फायदे के लिए बनाया, तो कंसर्न क्या है? तो कंसर्न ये है, कंपनीज आर वेरी अनहैप्पी विद दिस, ठीक है. वो कह रही है, वो दिस ब्रांड्स से दैट दे वर नॉट आस्क्ड बिफोर द डिसीजन. हमसे तो पूछा ही नहीं था, हमारा मटेरियल है, एंड देन यू आर सेइंग दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस ऐप ऑफ योर्स, ठीक है. दूसरी चीज आती है, दे डोंट वांट प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ऐप्स. हमें नहीं चाहिए, मेरा फोन है, मैं इसमें कोई गवर्नमेंट ऐप नहीं डालना चाहता, राइट. सो नाउ अनदर थिंग अपार्ट फ्रॉम लाइक दीज कंपनीज प्रॉब्लम, देयर इज अनदर कंसर्न, दैट इज प्रिवेसी कंसर्न, कि हमारी प्रिवेसी कहाँ है. कुछ ग्रुप कह रहे हैं कि दिस ऐप could be used for surveillance. क्या पता हम पर नजर रखी जा रही हो, right? What activities we are using, what we are doing in our phone, right? So this privacy
is very important, right? Then it may reduce privacy and users freedom also. People should choose what app they want. अब अगर मुझे नहीं चाहिए, although government is saying that you can basically delete this app, then but again there is a one word which is like came in this rules that this app should be pre-installed. It must be there. So this must says that how free we are actually in reality. तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया 2 दिसंबर को 2025 में कि जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि ऐप जो है ऑप्शनल है, यूजर जब चाहे तब डिलीट कर सकते हैं। बट फिर उसके बाद ये इसका मतलब होता है कि फोन मेक मस्ट इंस्टॉल इट, राइट? एंड बट द यूजर डजंट हैव टू कीप इट। तो इसीलिए ये सारे के सारे कंसर्न्स हमारे पास आते हैं। सो दीज आर द इश्यूज दैट दिस ऐप हैज बीन लाइक क्रिएटिंग सो फार। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव? डू यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? ओके, नाउ व्हाई वी आर रीडिंग इट? वी आर रीडिंग इट बिकॉज ऑफ जीएस पेपर 3, क्योंकि ये कवर करता है हमारा साइबर सिक्योरिटी, आईसीटी इन गवर्नेंस, एंड टेल्स अस अबाउट द डिजिटल रेगुलेशंस आल्सो, एंड टेल्स अस अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द डाटा प्राइवेसी आल्सो, राइट? एंड टेल्स अबाउट द सिविलियंस कंसर्न्स आल्सो। इन सारी चीजों के बारे में ये चीज बताता है, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एंड इट आल्सो टेल्स अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू लिंक दीज न्यूज। एनीथिंग? डू यू वांट मी टू रिपीट? तो यहाँ तक समझ में आया कि डीओटी ने ऑर्डर दिया है कि फोन कंपनीज के पास में ऐप होना चाहिए, ठीक है? एंड इवन एग्जिस्टिंग फोन मस्ट मस्ट एज बनाया गया है, राइट? तो पुशबैक ये है कि कंपनीज ऑब्जेक्ट कर रही है उसको, वो बोल रही है दैट वी डोंट वांट दीज प्री इंस्टॉल्ड ऐप इन आवर फोन, ठीक है? दूसरा, सॉफ्टवेयर कंप्लायंसेस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग सच ऐप्स इन आवर फोन। फिर उसके बाद सर यहाँ पर लेकर आता है कि सर्विलेंस तो नहीं है ये, दिस इज द बिग क्वेश्चन दैट दीज सिटीजंस आर कमिंग अप विद। गवर्नमेंट ऐप को ट्रैक कॉल्स एंड डेटा, प्रिवेसी की कहां पर बात है, राइट? देन दीज यूजर डिडंट कंसर्न्स ऑन कंसेंट, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि ऑप्शनल है, आप जब चाहो आप डिलीट कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, राइट? Then this help reduces cyber and fraud, better safety for 1.2 billion cases because बहुत ज्यादा नंबर ज्यादा तादाद में बेसिकली ऐसे केसेस इंक्रीज हो रहे थे, राइट? सो फॉर दिस सेफ्टी कंसर्न्स दे इंट्रोड्यूस दिस ऐप। नाउ कंट्रोल फेक सिम्स एंड स्टोलर फोन्स। इशू ये है कि प्रिवेसी और सिक्योरिटी का डिबेट है। दिस कुड कम इन केस स्टडी आल्सो, सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग दिस एग्जांपल। केस स्टडी में ऐसे ही एग्जाम्पल लिखने होते हैं, राइट? बैक स्टोरी जितना तुम ज्यादा पढ़ोगे, दिस विल हेल्प यू टू एनालाइज इट, राइट? सो यू कैन write this, that privacy versus security debate, as in 2025 also this case study regarding this topic came. Now state control versus user freedom also, again important thing for the case study. यूपीएससी का सिग्निफिकेंस कहाँ है? जीएस पेपर नंबर 3 में, as it tells about the cyber security, digital regulation, ICT governance, data privacy, clear to you. Is there anything? All clear? Okay, good. चलो now the need for heart resilient urban planning. अर्बन और रूरल का गैप, इट इज लाइक गोइंग फॉर एजेस, ठीक है? सिर्फ डेवलपमेंट की वजह से दिस गैप वी आर नॉट स्टडिंग, देयर इज लाइक लॉट्स ऑफ इश्यूज, देयर इज लाइक लॉट्स ऑफ गैप दैट वी आर स्टडिंग अबाउट अर्बन एंड रूरल, ठीक है? अब एक और गैप हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि urban which is so developed, we are moving in our life like so much that we forgot how we should keep ourselves healthy, how we should keep ourselves happy, right? So यही concern इस न्यूज में आया है। we are like daily बच्चों से लेकर बड़ों तक, ठीक है? Students are running for their examinations, people are running for their like 9 to 5 jobs, right? So this competition is going in large number, right? और इसी की वजह से health problems, health issues are coming up with, right? डिजिटली बेसिकली जो हमारा डिप्रेशन है, एंजाइटी, राइट? ऑल्दो दीज थिंग्स आर रिकॉग्नाइज्ड नाउ। इससे पहले तो रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता था, बट देन अगेन ओनली दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एज इश्यूज आर अराइजिंग अ लॉट। तो अब हो ये रहा है कि थिंक ऑफ अ सिटी, ठीक है, एज अ लिविंग बीइंग। मतलब ये मान लो कि कोई स्टेट है, कोई जगह है, कोई पोर्शन है, अपना कमरा, कोई भी छोटी सी जगह मान लो अपने आजू बाजू की, एज अ लिविंग बीइंग, एक जीता जागता इंसान है ये सिटी, राइट? लाइक अ ह्यूमन बॉडी, टेक इट एज अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है? जस्ट लाइक योर हार्ट नीड्स गुड ब्लड, ठीक है, बहुत जरूरत है उसकी गुड फ्लो ब्लड की जरूरत है, राइट? क्लीन एयर की जरूरत है, प्रॉपर रेस्टिंग की जरूरत है, राइट? हेल्दी हैबिट्स की जरूरत है, राइट? और काफी जरूरत है दैट वी स्टे स्ट्रॉन्ग, राइट? नाउ दिस सिटी नीड्स सर्टेन कंडीशंस टू कीप इट्स हार्ट हेल्दी, right? But imagine that someone builds a young city carelessly,
and sorry. I hope it is visible now, everyone. अब दिख रहा है ना? Okay. I hope it's visible now. Okay, so as I was saying that there is this gap between rural and urban which is going for like ages, ठीक है, not only through development but through other concerns also. जब भी हम urban की बात करते हैं तो we see this like as a developed position, as a position where people are moving towards so that they can like fulfill their dreams. Rural को हमेशा पीछे देखा जाता है. But in this news, in this current news, what happened? Rural जो है development की तरफ है and urban is somewhere lacking behind. ठीक है. अब imagine करो, think of this city लाइक अ लिविंग बीइंग, एक जीता जागता इंसान, एक जीते जागते इंसान को क्या चाहिए? एक ह्यूमन बॉडी की तरह से ट्रीट करो इस सिटी को, इस पोर्शन को, इस जगह को, राइट? सो जस्ट लाइक योर हार्ट नीड्स गुड ब्लड, ठीक है, अच्छा फ्लो, ब्लड फ्लो चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, राइट, क्लीन एयर चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, हेल्दी हैबिट शुड बी देयर, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर अ हेल्दी बॉडी, राइट? और इमेजिन करो टू स्टे अ स्ट्रॉन्ग, राइट, अ सिटी नीड्स सर्टेन कंडीशंस टू कीप इट हार्ट हेल्दी, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान को चाहिए वैसे ही एक सिटी को भी जरूरत है इन सारी चीजों की, राइट? बट इमेजिन दैट समवन बिल्ड सिटी केयरलेसली, कंक्रीट बिल्डिंग्स आर देयर, ना ट्री है, ना कोई पार्क है, ना कोई बेसिकली प्रिकॉशंस आर देयर कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, राइट, लॉट्स ऑफ पोल्यूशन इज देयर, बहुत ज्यादा नॉइज है, राइट, पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, right? So over time, the heart, the city of like the city, it weakens. So people living there get disease like heart disease, diabetes, stress-related issues, and their quality of life that falls. So this is what happening in the urban cities. This is why we are reading it. It is very important. Okay, to make sure that you are writing all the current affairs that I'm going to dictate it to you. Now, what is basically what is happening that in many Indian cities, more and more young and middle-aged people, okay, under 50, and not only under 50, but even kids also, 3-4 year of kids are getting heart attack, right? They are like suffering from cardiovascular diseases. So much more than these rural areas. So the reason is long daily, right? This happening, the running towards this alive. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ना तो हम प्रॉपर स्पेस में ले पा रहे हैं, ना ही हम प्रॉपरली अपने आप को खुद को देख पा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस पीपल आर सफरिंग, ठीक है? सो ऑन द वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025. So World Habitat Day 2025, MOHUA and experts, they argue that it's time, it's finally time that we change that how we plan cities. अब जो है हम सिटीज को इस तरीके से प्लान करेंगे दैट इट विल नॉट अफेक्ट एनीवन हेल्थ वाइज, राइट? सो इंस्टेड ऑफ व्यूइंग सिटिंग प्लानिंग एज जस्ट रोड्स, हम सिर्फ रोड्स ना देख के, सिर्फ बिल्डिंग्स ना देख के, राइट, सिर्फ वाटर और सैनिटेशन ना देख के, वी आर गोइंग टू लुक एट अदर सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑल्सो, ठीक है? वी मस्ट व्यू इट एज लाइक पब्लिक हेल्थ मिशन, पब्लिक हेल्थ मिशन. जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाउ वी आर प्लानिंग द सिटीज एंड अकॉर्डिंग टू दी हेल्थ वाइज, अकॉर्डिंग टू गिविंग द इम्पोर्टेंस फॉर द पीपल. नाउ इन सच सिटी अब होगा क्या क्या, तुम्हारे घर, तुम्हारा वर्क प्लेस, तुम्हारी मार्केट, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा पार्क, ठीक है, बहुत सारी चीजें, तो देयर बी लाइक मोर थिंग्स लाइक आर व्हेन वॉकिंग और साइकिलिंग डिस्टेंस पे होगी, ताकि तुम चलकर जा सको,
ठीक है, और तुम्हारी जितनी भी साइकिल डेली होगी वो बूस्ट करेगी हेल्थ को, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो है सिटीज को प्लान करेंगे, दिस हैज बीन सेड। सो देयर आर लाइक प्लेंटी ऑफ ट्रीज, पार्क्स, ओपन स्पेसेस, ठीक है, जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है, राइट, एंड दे हैव लाइक लेस और पोल्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पर ही जा सकते हैं तो विल यूज दिस ट्रांसपोर्ट लेस, राइट। अगर हम लेस ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो बेसिकली दिस पोल्यूशन, राइट, इट विल नॉट हैपन। तो इसी वजह से हम इस तरीके से सिटी को प्लान करने वाले हैं। सो एवरीवन, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, गेट्स एक्सेस टू दिस क्लीन एयर, ये ग्रीन स्पेस भी जो पार्क बनाया जाएगा, राइट, एंड these walking paths also. So nearby basic facilities you will be given. So that way, living in a city, right, no longer ruins your health. So instead the city supports a healthy lifestyle. तो इसी तरीके से हम लोग ये सारी चीजें प्लान करके चलेंगे. This has been said. Understood till here? अब स्टेप वाइज समझते हैं कि इंडियन सिटीज जो हैं ये हार्ट डिजीज हॉटस्पॉट बना क्यों रही है, जरूरत क्या है। तो द हार्ट डिजीजेस आर लाइक राइजिंग वेरी फास्ट इन इंडियन सिटीज, एंड देयर आर टू शॉकिंग पॉइंट्स दैट केम आउट। पहला ये कि हार्ट डिजीज ऑलमोस्ट ट्वाइस इज एज कॉमन इन अर्बन एरियाज कंपेयर टू रूरल एरियाज। दो दुगुना जितना रूरल एरियाज में उससे उससे दो गुना अर्बन एरियाज में हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज पता चली कि काफी सारे पेशेंट जो हैं वो यंगर हैं, 50 साल की उम्र से ज्यादा, यंगर देन 15 years old, ठीक है, एंड विच इज नॉट अ गुड नंबर, राइट। पहले लाइक पीपल यूज टू लाइक हैव डेथ रेट जो कम होता था, राइट, बट बिकॉज ऑफ दीज राइजिंग सिटीज, बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल, ठीक है, दीज थिंग्स आर हैपनिंग मोर एंड मोर, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ इशू विच शुड बी कंसर्निंग, और गवर्नमेंट इस चीज को इज टेकिंग इट सीरियसली, वो एक अनदर गुड थिंग है, राइट। अब why cities are like causing more heart problems? Cities में ऐसी चीज क्यों हो रही है? Because modern city life is very unhealthy, ठीक है, ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। People like sit for long hours in office, basically notification from your side, please keep moving, ठीक है। दूसरा, ट्रैफिक जैम्स इतना ज्यादा होता है, ठीक है, लॉन्ग डेली ट्रेवल अगर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हो गए। एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा हाई है, इस पे तो हर रोज एक एक न्यूज आती है हमारे पास में, राइट, कि एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा हाई हो चुका है, हमारी सांस लेनी मुश्किल हो गई है, राइट। तो ना कोई ग्रीन स्पेस है, ना कोई ओपन स्पेस जहाँ पे हम वॉक कर सके, जहाँ पे हम एक्सरसाइज कर सके, राइट। जस्ट अ सेकेंड। तो बेसिकली यही इश्यूज है कि एक आदमी बेसिकली दिल्ली में ड्राइव करता है 20 किलोमीटर टू वर्क इन हैवी ट्रैफिक, ठीक है, घंटों तक ट्रैफिक में खड़े रहते हैं। गुड़गांव में चले जाओ, नोएडा में चले जाओ, यू विल बी नॉट एबल टू मूव। सो दिस इज नॉट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, डजंट मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग, इफ यू आर नॉट हेल्दी इनसाइड, राइट, यू आर नॉट गोइंग टू लिव मोर देन 50 years, किसके लिए इतना कमा रहे हो? सो दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन लाइक कम अप विद। तो दिस लाइक वी ब्रीथ पोल्यूशन, राइट, वी सिट फॉर आवर्स, और दूसरा क्या है कि ना हमारे पास टाइम है वॉक करने के लिए, हम लोग इतने बिजी हो चुके हैं। सो दिस इज द गैप दैट हैज बीन कम, राइट। So urban planning in India is like very much broken, ठीक है। सो व्हाट इट सेज कि इंडियन सिटीज जो है वो बहुत बैडली प्लान की गई है, ठीक है। वहां पे डिफरेंट पार्ट्स लाइक हैंडल्ड आर सेपरेटली, हाउसिंग बाय हाउसिंग डेप्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट बाय अनदर डेप्ट, और फिर उसके बाद हेल्थ बाय अनदर डेप्ट, ठीक है, और उसके बाद बाय एनवायरमेंट बाय अनदर डेप्ट। तो इस तरीके की जो प्लानिंग है विच इज वेरी रिस्की, ठीक है, इसकी वजह से जो है हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एंड इट इज वेरी बेसिकली कंसर्निंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा राइज हो रहे हैं, रिसेंटली बहुत ज्यादा राइज हो रहे हैं। दिस इज व्हाई इट केम इन न्यूज, ठीक है। अब कोई प्लान ही नहीं कर रहा है साथ में, तो रिजल्ट क्या हो रहा है कि रोड्स विद नो फुटप्रिंट्स आर देयर, ठीक है, बहुत ज्यादा कार्स हो चुकी हैं, पोल्यूशन तो हम लोग देख ही रहे हैं, राइट, एवरी सिंगल डे इट इज कमिंग इन द न्यूज, ना कोई पार्क्स है, ना हमारा लॉन्ग कम्युनिटीज है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सीलो प्लानिंग, another important word, silo planning. And as I said, whatever questions I asked you, please write in the comment section, क्योंकि हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे,
तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है हेल्दी, लाइक हार्ट हेल्दी अर्बन प्लानिंग विच गवर्नमेंट केम अप, हार्ट हेल्दी, मतलब इस तरीके से प्लानिंग की जाएगी सिटीज की दैट पार्क्स आर इंट्रोड्यूस देयर, वॉकिंग डिस्टेंसेस प्रोड्यूस देयर, राइट, और ताकि आप जो है कार वगैरह जो है कम यूज कर पाओ, ठीक है। अब इसके 5 पिलर हो गए। पहले तो ये कि वोकेबिलिटी और एक्शन होगा, ठीक है, मोबिलिटी होगी। जो जितनी भी सिटीज है, राइट, यू कैन वॉक क्लियरली, ठीक है, और तुम जो है साइकिल सेफली चला सकते हो। सो जितना तुम ज्यादा वॉक करोगे इट विल हेल्प यू, राइट। सो इन सारी चीजों की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा, पार्क्स होंगे, ट्रीज होंगे, ठीक है, जितना भी ग्रीन वॉल्स होंगी वो सारी चीजें तुम्हें दी जाएंगी, राइट। तो जितना भी होगा ग्रीनरी पे फोकस किया जाएगा, राइट। दूसरा, मिक्स लैंड यूज होगा। नाउ मिक्स लैंड यूज इज दैट मीटिंग हाउस प्लस शॉप्स प्लस स्कूल्स प्लस पार्क्स नियर टू ईच अदर, ताकि तुम्हें वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ मिल जाए एंड यू डोंट हैव टू यूज दीज कार्स। कार्स नहीं यूज होंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा तो यूल हैव द एनवायरमेंट वेयर यू कैन ब्रीथ प्रॉपर्ली, ठीक है। अब जितना स्कूल तुम्हारा पास में होगा, ऑफिस पास में होगा, ठीक है, तो यू कैन वॉक इंस्टेड ऑफ ड्राइव। तो चौथा हमारे पास है कि अफोर्डेबल क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बी गिवन टू यू, ठीक है। ज्यादा मेट्रो बनाई जाएंगी, ज्यादा बसेस होंगी, ज्यादा ई व्हीकल्स होंगी, तो यू डोंट हैव टू, ईच एंड एवरी पर्सन डोंट हैव टू लाइक ट्रैवल इन द कार। सारे लोग सड़क पे कार लेकर नहीं निकल जाएंगे, इसलिए कम एक ही ट्रांसपोर्ट होगा हमारे पास, एक कॉमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगे, तो उसमें हम जितना ट्रैवल करेंगे, तो जितने भी हम लोग एक एक आदमी एक एक कार में ट्रैवल करता है और जो पोल्यूशन इट क्रिएट्स विच इट विल बी स्टॉप। अंडरस्टूड है। फिर उसके बाद हमारे पास हेल्दी फूड इकोसिस्टम होगा। हेल्दी फूड इकोसिस्टम का मतलब है कि दिस क्रिएट्स इट इज वेरी हेल्दी फूड लाइक इज इजीली अवेलेबल टू अस, ठीक है। लोकल वेजिटेबल मार्केट्स होंगी, उसके बाद कम्युनिटी गार्डन्स होंगे, उसके बाद लेस फास्ट फूड होगा जो डोमिनेंस दिखाएगा, राइट। और अगर ये सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे तो इट विल हेल्प अस इन दी मेकिंग आवर हेल्दी हैबिट्स मोर। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इज देयर एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? So from this we understood that low income like people suffer more, ठीक है। अर्बन एरियाज में जितना हम पैसे की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, दिस लाइक वी आर सफरिंग, राइट। और इमेजिन करो अर्बन में तो लाइक देयर आर पीपल हु आर लाइक नॉट अर्निंग मच, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, राइट, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड दैट मच ऑफ दोज थिंग्स, राइट। हम लोग जिम जा सकते हैं, मिडिल से लेके लाइक हायर तक हम लोग जिम जा सकते हैं, लाइक वी कैन टेक प्रिकॉशंस, वी कैन डू सच थिंग्स, बट अर्बन एरियाज में देयर आर पीपल हु आर नॉट अर्निंग मच, so this is a problem issue for them, ठीक है। तो is this clear to you? तो इस अर्बन प्लानिंग में वी शुड इंक्लूड स्लम्स आल्सो, वी शुड इंक्लूड अदर पार्ट्स लाइक लो इनकम नेबरहुड शुड आल्सो बी देयर। दूसरा, वल्नरेबल पॉल्यूशन पॉपुलेशन शुड बी देयर, ठीक है। ये सारी चीजें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, तभी हम अचीव कर पाएंगे दिस हार्ट हेल्दी प्लानिंग, राइट। एंड गवर्नमेंट इज एक्चुअली कंसर्निंग, राइट। सो दिस इज अनदर गुड थिंग अबाउट द गवर्नमेंट। तो अब ये इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर नंबर 1 में, बिकॉज इट टेल्स अबाउट द अर्बनाइजेशन व्हिच आई हैव लाइक taught in the classroom also. Another thing is GS paper number 2, which tells about the public health and policy. GS paper 3, which tells about the environment and infrastructure. I hope it is clear to you. And is there any question? Okay. So with this, we'll end the today's current affair class. And as I've said it before also, please, whenever you're reading the news, make sure that you are writing all the keywords that I'm mentioning to you. Otherwise, it will make no sense reading these headlines, because the person, the student sitting next to you is doing the same thing. You have to make your answer unique. You have to write those keywords. You have to make it efficient. And that will happen only when you'll connect these news. That will happen only when you'll understand these keywords. Back history, try to understand back history as much as you can. Try to read these news as much as you can. Make it as a story. You don't have to mug up these headlines. It will be of no use, because by one news you can connect it with multiple of papers. So I hope that this is clear, and I'll be signing off, and I'll see you tomorrow at the same time here.